पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करने से सर्व प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती और हनुमान जी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहती है। तो आइए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करते हैं। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत प्रियं पंचवक्त्रं महाबिभं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वतो वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमेङ्गारूढं वक्त्रं वक्रतुण्डमहाबलं सर्वनागप्रसन्मनं विश्वभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिं कौमुदीकिं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चाशयमच्युतं नेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटेरोपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाधं निशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम् ॐ हरिमर्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवच पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं
नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षट्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्युना दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियं पञ्चवक्त्रं महाबिभं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वतो वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमेङ्गारूढं वक्त्रं वक्रतुण्डमहाबलं सर्वनागप्रसन्मनं विश्वभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिं कौमुदीकिं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चाशयमच्युतं नेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटेरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाधं निशं
मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं। शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम्। ॐ हरि मर्कट मर्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवच पठेन्नरः। एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम्। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं। पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं। षट्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टवारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदम्। नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात्। इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाबिभं त्रिपञ्चनयनैर्युतं। बाहुभिर्दश
त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमुदीकिं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चाशयमच्युतं नेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाधं निशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम् ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवच पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षट्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।